everyone, in this video we will be learning about one more type of vector integral. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लाइन इंटीग्रल को हमने पढ़ा था. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे सरफेस इंटीग्रल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज सरफेस इंटीग्रल, उसका एप्लीकेशन का क्या है, एंड देन वी विल बी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, how we will solve the question. So first of all we will start with the definition. Surface integral is a double integration over three-dimensional surface. Line integral में भी हमने देखा था कि line integral मतलब we will take the integration of given surface along one curve which was given from one point to other point. यहाँ पे क्या होता है, surface integral हम जब लेते हैं double integration लेते हैं, लेकिन जब हमने इंटीग्रेशन के वक्त जो पढ़ा था डबल इंटीग्रेशन, उसमें मतलब दैट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हियर व्हाट वी आर टेकिंग. हियर आल्सो वी विल बी टेकिंग डबल इंटीग्रेशन बट इट्स स्लाइट डिफरेंस. यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हम ले लेंगे ओवर द 3D सरफेस, 3 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं. सो दैट्स डिफरेंस in the surface integral, and normally जब हम double integration करते हैं तब हम 2D surface लेते हैं. So that's a major difference, you have to keep it in mind that well. तो यहाँ पे surface integral हम जब लेते हैं then we are taking double integration over 3D surface. So हम निकालेंगे कैसे, उसका formula क्या है, ये है f into ds, और in other way what we can write integration of surface f vector into n vector into ds. ये क्या है n vector, ds क्या है, that we will be learning in detail. Right now you just focus on what is the formula. So f vector which is given, n vector which is a normal unit vector, and ds it's a small part of a given surface, infinitesimal small part. We say that's we call it as a ds. How we will take it depends on the situation or depends on the question. So how it will change we will discuss more in detail. यहाँ पे where f vector is the given function and vector is a normal unit vector which is pointing outwards of the surface. Now application we will just discuss application very briefly. So where we use the surface integration to calculation of center of mass of moment and moment of inertia, and when we want to find the electric charge which is distributed over the surface. So whenever it is current is passing or through any object, so how much electric charge is getting distributed over the surface, to find that it gets used surface integral. So there are various applications, but I try to put it a few of them, couple of I put it over here. So ds, as I said, it's a small, very small part of a given surface, we call it as a ds. And how we take ds, that depends on the given surface where it is projected. Now projected means what? Here again, as we said here, surface integral means we are taking a 3-dimensional object or the surface we will be taking into consideration, and in order to find the double integration मतलब with respect to either it will be xy, it will be yz, or it will be xz. दो डबल इंटीग्रेशन मतलब दो ही एक्सिस हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट जो सरफेस है वो 3 डायमेंशनल दिया हुआ है. सो व्हाट वी हैव टू डू इट, 3 डायमेंशनल मीन्स एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों एक्सिस वहाँ पे है, लेकिन हमें तो यूज़ करना है एट ए टाइम दो ही डबल इंटीग्रेशन में दो ही हम एक्सिस यूज़ करते हैं, एक्स एंड वाई वैल्यूज़ यूज़ करते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3D सरफेस को हमें 2D में somehow we have to convert it so that we can find the integration, double integration. तो in order to do that, what we have to do it, वो 3D surface को हमें project करना पड़ेगा. Project means what, we try to get the, it's a shadow or any of this any of the plane. Like here I will draw it to make it understand clear. Let's say this is x, y, and this is a z axis. So this is a xy plane, this is a yz plane, and this is a xz plane. So these are 3 planes.
So what we are doing, 3D surface is given, वो 3D को हम किसी एक प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे. मतलब अगर एक्स वाई प्लेन पे अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई, मतलब इंटीग्रेशन विल बी लाइक एक्स एंड वाई सिर्फ हम कंसिडर करेंगे वहाँ पे इंटीग्रेशन. इफ़ वी विल प्रोजेक्ट इन वाई जेड, सो हियर आई हैव listed all these 3 situations so that it will be easy for you to understand. So सबसे पहले 3D को हमें 2D में कन्वर्ट करना होगा. क्यों? क्योंकि हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं. डबल इंटीग्रेशन में 2 ही वैल्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं. 2 एक्सिस मतलब x और y, या तो yz या तो zx. ये at a time 2 values only will be considering, so that we have to project the given surface in any of the plane, any one of the plane. So depending on that ds value will be changing. So for example, if the given surface is lying in this xy plane, or if you are projected in xy plane, मतलब उसको हम प्रोजेक्ट करते मीन्स इट्स शैडो वी आर टेकिंग इन xy plane, then what we will take the ds is dx into dy upon n vector n cap into k cap. मतलब एक्स वाई प्लेन को जो नॉर्मल होगा, एक्स वाई प्लेन के लिए जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है वो जेड एक्सिस होता है, और जेड के साथ जो आता है यूनिट वेक्टर दैट इज़ के कैप. सो दैट वी विल बी टेकिंग ओवर हियर एन कैप इनटू के कैप, because that is the perpendicular to xy plane. Similarly, if the given surface we project on yz plane, मतलब यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ds की वैल्यू क्या रह लेंगे, dy इंटू dz अपॉन n कैप इंटू i कैप. क्योंकि yz प्लेन के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा रहेगा, x एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर एक्सिस. सो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज नथिंग बट i कैप. So that we will be taking over here. So n cap into I cap. Similarly, if the given surface, if you project it on the xz plane, तो हम क्या करेंगे, ds कैसे निकालेंगे, dx into dz, और इसको जो परपेंडिकुलर वाइज xz प्लेन के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा रहेगा, y एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा, और उसका यूनिट वेक्टर जो होता है j कैप, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. So that's how it will be changing. This value will be keep changing, and according to this you have to keep it in mind how the ds value will be changing. It depends entirely on where you will project the given surface, in which plane you will be projecting it. So it depends on that. So it's a very important concept, आपको समझना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन के according to question it will be changing it. So आपको ये समझ में आता है तो then it will be easy for you to solve the questions. Means ds क्या लेना है वो आपको easy हो जाएगा, and accordingly you can do the calculation. So next part is n cap. मतलब यहाँ पे जो formula लिखा है मैंने दिया था, ये इस we will be using this formula to find the surface integral. So here we just learned about ds. ds को वैल्यू हम क्या लेंगे, we haven't discussed about n vector और unit vector के हमने बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, and this will be given in the question. So now we will be discussing about the normal unit vector, because that will also depend on surface where it is lying. Given surface कौन से plane में lie कर रहा है, it depends on that. So that's what I have put it in, how we are going to find the value of normal unit vector. If the 3D first surface is lying in a plane or parallel to any plane, then the n cap will be normal unit vector of that plane taking outward. So what does that mean is, like same diagram I will draw it here again. If the given surface is lying in xy, if the given surface is lying in this plane, if it is lying in the parallel plane, मतलब यहाँ पे xy plane के सामने ही मतलब parallel plane जो भी होगा उस try to visualize it, so it will be easy for, अगर if you imagine any plane which is parallel to xy plane, if your surface is lying over there,
in that case also what we will take n cap value is that the normal unit vector of that plane taking outward, मतलब अगर xy प्लेन में अगर प्लेन है सरफेस है या तो उसके पैरेलल प्लेन में है तो देन व्हाट वी विल टेक यूनिट नॉर्मल वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन में अगर सरफेस है सो ऑब्वियसली z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दैट और उसका जो नॉर्मल होता है z एक्सिस का वो तो होता है k cap. So that value we will be taking, n cap's value will be k cap in this case. So similarly, if the plane of the surface, given surface, if it is lying in xz plane, अगर xz plane में अगर lie कर रहा है या तो अगर वो किसी ऐसा plane है जो xz को parallel है उस plane पे अगर lie कर रहा है then you will be taking n cap's value which is perpendicular to xz plane. xz plane के लिए कौन सा perpendicular रहेगा, y perpendicular रहेगा और y का यूनिट वेक्टर y एक्सिस के ऊपर जो होता है वो होता है j cap. So n cap what will be n cap's value in that case, it will be j cap. So this is how the value of normal unit vector that also will be changing depending on the surface where it is lying. ये तो हमने देख लिया जब सरफेस वॉज लाइंग इन एनी प्लेन. अगर हो सकता है कि वो सरफेस इज़ नॉट लाइंग इन एनी ऑफ दिस प्लेन, मतलब अगर वो एक्स वाई प्लेन पे नहीं है, वाई जेड प्लेन पे भी नहीं है, एक्स जेड प्लेन पे भी नहीं है, ना तो वो किसी पैरेलल प्लेन पे है. मीन्स इफ इट इज़ समथिंग लाइक ए टिल्टेड इन बिटवीन, इट्स नॉट लाइक अ पैरेलल टू एनीथिंग और इट्स नॉट इन एनी फील्ड, जैसे टिल्ट हो चुका है किसी दो प्लेन के in between that. In that case you can project that surface in any of this plane, means you can project that given surface in either xy plane, in yz plane or in xz plane. It's your choice, it's entirely your choice in that case. So in that case how we find the normal vector, how we take the normal vector is क्योंकि वो किसी प्लेन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है या तो किसी प्लेन को पैरेलल प्लेन जो भी आएगा उस पर भी लाइन नहीं कर रहा है, then how we will take the unit normal vector, that we will be taking it by using this formula gradient of phi will be nothing but the given surface equation and उसका normal vector हम निकालेंगे. ये formula हमने already पढ़ा हुआ है very first starting of the chapter. Same formula we will be using, we will be finding normal vector to that given surface and that we will be using over here as n cap's value. I hope it is clear because क्योंकि ये concept अगर नहीं clear होता है तो solving question will be quite difficult. तो इसको clear होना चाहिए कि n cap की value क्या लिखेंगे आप और ds की value आप क्या लिखेंगे, because from question to question these values will be differing. Let's take a small break over here. Meantime, you can revise the concept. In the next video, we will be discussing this more in detail.